अच्छा सो हमरो जो आपन ग्रुप रे दिया थिला सेट 1 और सेट 2 हैला 200 क्वेश्चंस हमरो जनवरी रु सेप्टेम्बर पर्यंत सेटा हमें कवर करिबा तंती हमरो 10 टा सेट अछि 1000 क्वेश्चंस अछि जोदरु 800 टा क्वेश्चंस आपनकर नॉर्मल जनरल इंडिया इंटरनेशनल से सब अछि और 200 टा ओडिसा पर अछि ओके ता भितरु 600 टा क्वेश्चंस हमरो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस अछि ए टाइप हला जेमति ओपीएससी रे मैक्सिमम पड़े एटा रिलेटेड टू ओपीएससी ओनली ओके ओपीएससी एग्जाम पे स्पेसिफिकली राइट सो आउ बाकी जोटा रहिला 600 टा सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस ओके तापरे 300 टा आपनकर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जोड़ा कि 1 2 3 4 एमती देथिबो तो हम जनरली पड़े ओके 1 3 एंड 4 करेक्ट ओके से टाइप रो आउ गोटे जोटा दि वर्ष हला यूपीएससी जेमती आछी तीनटा की चारटा स्टेटमेंट देथिबो 1 स्टेटमेंट करेक्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट से टाइप ऑल करेक्ट हला सेमती 100 टा क्वेश्चन तो टोटल 1000 सेट्स रेटा अछि आउट ऑफ व्हिच 800 हला तो प्रथम 6 टा सेट सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन जोड़ा अछि हला आउ सब क्वेश्चन जोड़ा ओनली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ओनली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आपन रोज सो आउ इटा आपण सेल्फ स्टडी भी करबे सेही सेटा बेसिकली सेल्फ स्टडी करिवार मोटिव रे दिया सो दैट क्वेश्चन टा अछि ओके ता परे आपणकर तार सॉल्यूशन टा दिछि राइट सो लेट अस स्टार्ट देन एटा आपण ग्रुप रे भी दिया छि ग्रुप छडा आपणकर ये रे भी दिया छि कोन टेलीग्राम चैनल रे भी दिया छि सेठु भी आपण ताको डाउनलोड कर दे परिबे हैना लेट अस स्टार्ट देन क्वेश्चन 1 को असंतु सो एटा हमर कवरेज छि जनवरी रु जून ओके सेट 1 रो सेट 1 एंड 2 रो कवरेज छि जनवरी टू जून which of the following statements regarding G20 summit 2023 is correct okay so एटा गोटे जिंस मन रखिबे सेम क्वेश्चन टा आपनकर न आसी पारे बट एक्सप्लेनेशन बहुत टू दी पॉइंट रखाई छि ओके एमति ना कि दी पेज एक्सप्लेनेशन बही पढला ले हिजबंती ओके सेटा कराइनी बट जति की दरकार ओके सेति की दिया छि आपण थरे एक्सप्लेनेशन टा पढि दे काहे ना एग्जैक्ट ए क्वेश्चन टा न आस पारे एक्सप्लेनेशन रु आउ किछि पॉइंट्स आस पारे हैला तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत कंसाइज रखाई छि come to the first question which of the following statements regarding G20 summit 2023 is correct okay mo sabu I'm not going to all the options okay जो option टा खाली ठीक सेटा ही डिस्कस कर दवा so that हमें आजी ट्राई करिबा 1 और 2 सारिया पे ओके आजी 3 4 भी अपलोड हे जिवो ठीक है जी तो सही हिसाब रे अच्छा केते रु केते पढिबे बहुत पिला सेटा पचाउछन हला सेटा फर्स्ट मु क्लियर कर दिया करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट 10 टा रु 15 टा क्वेश्चन नो के एटी यूपीएससी बोले नो कि बहुत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक अछि तो बहुत टाइम दे दी करंट अफेयर्स ओके मैक्सिमम धरंतु 15 टा क्वेश्चन ओके कि अति बेसी 20 टा क्वेश्चन मैक्सिमम आसीबा सेही रेंज रे ही आसीबा ताडू कम बेस करे ओके काना ओपीएससी कोन करे स्प्रेड आउट करी कि क्वेश्चंस दिए प्रीलिम्स रे ओके तो हिस्ट्री रु भी एति आसे यूपीएससी रो कोन केबे हिस्ट्री रु 2 टा क्वेश्चन आसीबो 100 टा भीतर ओके एटी सेमति नहीं एटी से मोस्टली सब धरु से इक्वल वेटेज करी कि पकेबो ओके सो इफ यू सी आपण को जनवरी टू सेप्टेम्बर हैला सेप्टेम्बर टा भूल जिबेनी काई कि ना आपण भाबुथिबे कि अक्टोबर 27 रो अछि इनफैक्ट अक्टोबर फर्स्ट वीक भी पड़ी जो किछ कहि हबनी ओके आगुरु कोन आपण क्वेश्चन उडा ब्लॉक प्रिंट होतला तो सेति पई बहुत टाइम लागे 2 मास 45 डेज ब्लॉक्स करी कि दो प्रिंट करी एबे डीटीपी प्रिंटिंग होची 15 दिन रे भी हे जिवो सेटा ओके तेनु जनवरी ओके 2024 रु आपनकर सेप्टेम्बर 2024 एटा आउ लेटर मंथ्स उडा को बेसी फोकस दे which is basically okay your July okay June July August September आपको टिके बेसी emphasis दे right so question 1 question so I'll just discuss the question and the discussion okay answer so that I maximum jete cover kari pariba okay which of the following statements regarding G20 2023 is correct okay so
जो options देइछि, one earth, one family, one future. Okay, and just go through the explanation. India hosted the G20 summit for the first time in 2023, making it a significant event in global governance. Okay, so there are mainly theme upar hi question ta achi. One earth, one family, one future. Okay, it emphasizes global unity in addressing pressing issues like climate change, public health, and digital transformation. Okay, contrary to tabar se statements guda baki deuchi, contrary to statement C ta kon thila amara 2023 G20 summit focused primarily on climate change and no other issue. Okay, contrary to statement C, the summit covered wide range of issues, including digital transformation, sustainable development, climate finance, and global economic recovery. Okay, so se tapare all options ku se analyze karichi. Seita tike explanation part ta just go through that. Okay, apan just kali ensure korantu jo 1000 ta questions melibo thar thar taku dekhi debu. Okay, ସବୁ domain रो अछि set 1 और 2 रे maximum आपनकर current affairs based on ecology environment and some parts of economics अछि. Okay, तापरे पुनी set 3 जोटा आज अपलोड हबो 3 4 रो अलगा अलगा रहइबो. आज तो पूरा मिक्स्ड अछि, पॉलिटी रो भी अछि आपनकर, अदर इकोनॉमी रो भी अछि. Okay, so other things are also there. Question 2 question to which of the following countries recently announced plans to establish a global carbon pricing agreement? Okay, so that would be Germany. Okay, recently kahichi. So the author kono global carbon pricing agreement. So Germany has been a proactive leader, okay, in global climate change mitigation efforts and recently proposed a global carbon pricing agreement at various international forums. Okay, GA jete basis se hisabe taku use karibo. Okay, to se hisabe taku taro payments karika kariya pe padibo. Okay, this agreement aims to standardize carbon pricing to combat emissions and encourage sustainable industrial practices globally. So say prathama country, okay, kimba recently say country joda global carbon pricing agreement, okay, accept karichi. Other countries are also there. China, US are significant players in carbon emissions. The initiative has primarily been pushed by Germany. Okay. Next, UPI upare. So it got an important question. Which of the following statement is true regarding India's UPI and its global adoption? Okay. So UPI is now operational in 5 countries outside India, including Singapore and UAE. Okay. But eta ebe updated ହେଇଯାଇଛି. ठीक ଅଛି ତ. Can anyone tell me ebe keteta countries ର operational ଅଛି? 5 no. Okay. It has been updated as of today. Prime Minister जो एते देश बुलचंती बहुत गुडे देश रे सेटा से करि देखि ऑप्शन. Can anyone tell me ebe keteta country रे operational अछि UPI? Not 5. Okay. एटा आपण काम रहला काली मते कहबे एटा. Not 5 countries. Okay. ebe keteta countries रो अछि. So just check that. Right? So तापर से तरह explanation देखिबे जेमति कि point 8 टा भूल अछि कोन UPI टा 2016 में introduce हेतरा. Okay, so Singapore, UAE, Nepal, right? And as I told you recently, other countries have also agreed to it. So you find out if the UPI ko countries re apanakara, okay, active achi. Recently, which of the following countries announced a global plastic treaty initiative? Okay, so that is France. Okay, so France has announced a global plastics treaty initiative. Okay, other countries are also there. Joda Agroda Korchanti. Other countries like Canada and Japan have supported the initiative. Okay, but France has taken the lead in its formulation and advocacy. Okay, our exception code are Brazil. Brazil, okay, has not led this specific treaty initiative. Brazil deichi option. Okay, Japan and France have supported it, Japan and Canada, but France has led it. Okay. Then question 5, in 2023, which city hosted the COP18, the Conference of Parties, okay, UN Climate Change Conference.
Okay, that is in Dubai. Okay. So out of कुछ जगह केबे केबे ही थिला Madrid, okay, Glasgow 2021. Glasgow टा कोठी? UK, Sorry, Russia United Kingdom, ना Scotland? देखले? yes sir, Where is yes sir, Glasgow? United United Kingdom रे Kingdom, अछि, माने specifically Scotland रे अछि. So yes yes sir, okay, इसला बहुत न्यूज़ रे थिला केते बेले Brexit बेले. ठीक अछि. Brexit बेले स्कॉट्स कहले कि भाई आमे we are not ready, आमे बाहर ही. ओके, आपनकर जो यूनाइटेड किंगडम अछि, ओके, यूनाइटेड किंगडम रे कोन कोन कंपोनेंट्स? आमे पूछू खाली इंग्लैंड. इंग्लैंड तो अछि, इंग्लैंड छडा कोन कोन अछि? Netherlands, Wales, Ireland, हाँ, आयरलैंड माने स्पेसिफिकली नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक अछि. Wales, तापर Wales, Scotland, and वेल्स अछि. England, ओके, आउ भी अछि. सो एनीवे सेटा देखियो तो Scotland, ता sir. भीतर से कहथिला आमे बाहर जिवु. ओके, सो ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड. तापर क्वेश्चन 6 को आसंतु. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट इन 2023? Okay, that is the UN. Okay, Global Digital Compact. Tara main emphasis kon? It emphasizes the need for universal access to the internet. Okay, protection of privacy, human rights in digital space, and support for digital innovation in developing countries. Next question 7 ko asantu. Which country recently became the first in the world to legalize lab grown meat for public consumption? Okay, lab grown meat mane apan ko you are not actually killing the animals, to say सेटा artificial meat apan taku कहि परिबे. ठीक अछि, lab grown तो सेतरे कोन होबो ना diseases रहइबो. Okay, but the thing is that it is genetically modified. ओके, सेटा आपण ताको गोटे निज हिसाब रे ओके चेंज करिक ताको बनौछथि, राइट. तो सेतरे बहुत कंसर्न्स भी अछि, बट मोर और लेस ओके सिंगापुर has allowed it. Singapore became the first country in the world to legalize lab grown meat, allowing it for concerns हला mainly एते लंबा स्टडीज हेनी कि तार लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोन. सपोज से किछि म्यूटेशन की किछि गोटे इट विल गिव राइज टू एनी सच थिंग इन ह्यूमन बॉडी. ओके, तो सेटा एते लॉन्ग टर्म रिसर्च है. ठीक अछि, तो किछि समय पर ही लेट से 5 वर्ष 10 वर्ष टाइम फ्रेम रे आमे जानिबा कि मनुष्य जदि लैब ग्रोन मीट खाउची, ओके, तले ता ऊपर कोनटा इंपैक्ट होची. ओके, तो सेते लॉन्ग टर्म स्टडीज एटी हेनी, राइट. Allowing it for public consumption in 2020. So many countries are एडा बहुत गुडे countries तारा ये करछथि. ओके, तारा experimental research करछथि, किंतु से public consumption पे एपर्यंत के allow करनांती काना एमती strong results तांगा पाके नाही, consequences or negative issues. Okay, but it has gained global attention in 2023. So 2020 रो एडा allow कलानी. Okay, कौन तारो माने मेन रीजन कौन? सिंगापुर इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट्स ए रिच कंट्री. ओके, तो तांकर एमती कौन दरकार पड़ला कि से माने नेचुरल मीट, ओके, माने जोड़ा हमर एनिमल्स को मारी कि तांको मीट न नै कि आर्टिफिशियल मीट क्रिएट करछथि. तो मूव अलाइंस विथ सिंगापुर's commitment to food safety and innovation in sustainable food production. ए दुटा तांकर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन? फूड सिक्योरिटी. ओके, माने लोक माननकु मिसी मीट फॉर मेनी पीपल स्पेशली. ओके, कॉस्ट जदि हमें देखिबा पर ग्राम, ओके, प्रोटीन आपनकर जते मिलुची, तो मीट बहुत जण स्पेशली लोअर इकोनॉमिक स्ट्रैटा जे लोक माने अछंती तांको पई, ओके, सेटा बहुत इट इज अफोर्डेबल, स्पेशली लार्ज एनिमल मीट जोड़ा. ओके, गोटे मेजर रीजन अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस कॉजेस एंड ऑल कि बहुत जगह रे अपन देखिबे बीफ रो कंजम्पशन हुए काइना सेटा बहुत चीप. Okay, and in the countries where it is allowed, okay, pork भी सेठ में consumption हुए relatively, okay, that is cheaper as compared to let's say chicken or mutton, okay, or duck, जहाँ भी अपन कहले relatively cheaper से. Okay, तो सेटा भी गोटे food security and innovation in sustainable food production.
ओके तो एटा निजे बनाउछन्ती ना लैब रे बनाउ जते बनाबो राइट आ सिना आपनकर क्रॉप्स गरिका क्रॉप टा एबे ओके लैब रे लार्ज स्केल रे ही पर ओके छोटे स्केल रे तथापि होउची हाइड्रोफोनिक्स एंड ऑल सेडा सब आपण एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन रे सब पढुथिबे ओके तो एनीवे बट सेटा एबे मास बहुत बड़ पॉपुलेशन पे पॉसिबल है किंतु ए मीट टा आगु को जदी ताको सेंते एक्सपेंड करा हबो त सेटा हेइ परिबो तो फूड सिक्योरिटी भी देला कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम जदी गोटे कोडी वार हे गला ओके कि कोन गोटे प्रॉब्लम हला ओके तथापि आपण लैब्स अछि से लैब्स रे आपण मीट ग्रो करि परिबे ओके तो दैट इज अनदर तो ए दीटा अंडरलाइन करंतु मेन तार एम हैला फूड सिक्योरिटी ओके एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन lab grown meat also known as it underline karantu cultured or cultivated meat okay lab grown meat is also known as cultured or cultivated meat is produced through cellular agriculture which can reduce the environment impact of traditional meat production ठीक अछि तो जेंति कि पेटा जो सब से एनुअल राइट वाला कहउछन्ती कि काई मारू छ एक करछ तो एमति जदी करियो तले बेसी मारिया पई पडिबन ओके तो से प्रॉब्लम भी रहइबन राइट other countries like US and Netherlands are working on similar regulations ताकर भी they are also ready to do that but ताकर एते से माने कोन पूरा यूरोप रे हेले भी ताकर सब लॉन्ग टर्म हेल्थ असेसमेंट पर ही सेबडा अलाउ हो ओके सेडा एमति नहीं देखि अलाउ कर दियो राइट बट सिंगापुर एशिया भीतर के एपटे जदि हम देखिबा one of the developed countries they take public okay health very seriously तेणु से एनश्योर करूछन्ती कि क्वालिटी ऑफ मीट इज गुड सेतरे कोनोसी प्रकार रो ओके डिजीजेस नाही सो सेटा भी गोटे आपनकर प्रॉब्लम जेते बेले एक्सपोर्ट होउची ओके नेचुरल मीट टा तो सेतरे बहुत प्रकार रो डिजीजेस डिफरेंट कंट्रीज को स्प्रेड हे जाउची ओके सो सपोज इंडिया बफेलो मीट बहुत एक्सपोर्ट करूची तो एठी गोटे किछ हमर डिजीज हे गला हमें जो जो कंट्रीज के तको एक्सपोर्ट करू सब जगह को स्प्रेड कला okay that is why many European countries se mane India to se mane India ho ki South Asian countries no se mane meat garika okay dekhi jayenge नहीं not only meat other things also हमर सबले न्यूज रे देखथिबे कि ए मेडिसिन रो ए प्रॉब्लम बाहरला ए खाइबार ए प्रॉब्लम बाहरला जोटा इंडिया एक्सपोर्ट करूची बाहर ओके तो स्टैंडर्ड रो डिफरेंशिएशन अछि हमर स्टैंडर्ड्स कोन एटी एफएसएसआई अपन जानछथि ता स्टैंडर्ड आउ यूरोपियन यूनियन रो किंबा यूनाइटेड स्टेट्स ताको स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट फॉर एग्जांपल बेबी मिल्क फार्मूला जोड़ा अछि सेरेलैक अपन कहउछ ओके कि आउ जते बेबी मिल्क फार्मूला जोड़ा सब मल्टीनेशनल कंपनीज बने बनउछ ताकर सेठी दे डोंट ऐड Sir, एनी शुगर जीरो शुगर ठीक अछि तो जहा sir, बाकी जहा ताकर कंपोनेंट रही जीरो शुगर ओके बट इंडिया रे शुगर ऐड करछन काहे कि ना एठी हमर जो सब ऑर्गेनाइजेशंस माने अछंती एफएसएसआई ला कि अलगा जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस अछंती मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि जहा भी अलगा ऑर्गेनाइजेशन से माने ते यू नो दे स्ट्रिक्ट मोशन ओके जोड़ा कि आम पिला माने सेही शुगर बेस्ड जिंस खाई कि आगु को जाई कि ताको बहुत प्रॉब्लम होछ दे आर प्रोन टू डायबिटीज एंड ओके सेम थिंग दे आर सेलिंग इन यूरोप एंड अमेरिका बट से जिंसटा नहीं right so anyway question 8 को आसंतु which international treaty aims to establish the framework for biodiversity protection in areas beyond national jurisdiction निज देश भीतर तो आपण लॉ बनै छथि हमर जेंति फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अछि हजार प्रकार एक्ट में करते ओके ता बाहर को जाई establish the framework for biodiversity protection in areas beyond national jurisdiction okay that is the high seas treaty okay that is the high seas treaty so it was introduced under the United Nations Convention on Law of the Seas to protect biodiversity in international waters. For example, ए जो UNCLOS okay से केते गुडे सब ऑर्डर्स देछन जोड़ा कि फॉलो होबा कथा मेनली अगेंस्ट चाइना टोटली से गुडा मान चाइना हैज क्रिएटेड मेनी आर्टिफिशियल आइलैंड्स ओके नियर द फिलीपाइंस से जो आपण साउथ चाइना सी पका ओके जोड़ा कि आगुरु से वाटर सुडा कंटेस्टेड थिला फिलीपाइंस कोतला एटा दिस इज माय टेरिटोरियल वाटर ठीक अछि अलगा देश सुडा भी कहउतले तार केटा सांग अछन जंती कंबोडिया हरिका तो ताव सा मिसी की से जगह आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर दी सेठी आगुरु किछ नथला पानी ही थिला ओके बट एबे आर्टिफिशियल आइलैंड्स अछि राइट जोड़ा कि से तार सब मैरीटाइम रिकग्निशंस रु आरंभ करके सब प्रकार रो जिंस पई यूज करूछ ओके
Question number 9. Which country recently unveiled plans to develop the world's first fusion energy plant? Okay, nuclear fusion, right? So, जोटा की कोडी होचेडा. Best example कौन fusion रा? Nuclear fusion. sun. हाँ, hydrogen bomb, but सबुठु common example कौन है पर जोटा से everyday हमें face करूँ. Okay, Sun. yes, sun. Okay, sun रे जोटा अपना को रोज right. Hydrogen bomb तक के भी use प्राय है ही नहीं कि भगवान बोलते के भी ना हो. तो आमर जो atomic reactors अच्छी nuclear reactors सेटा कौन सेटा हमें fissile material रे करछी fission रे होची सेटा right. So एबे fusion energy plants UK is planning to develop by 2040. High cost investment किंतु थरे ही गला परे unlimited source of energy. Okay, और सेत्ता बड़े per unit price आस्ते आस्ते कमी कमी जीवो. Initial installation और research में बहुत पैसा दरकार. सेपे 2040 सुधा से plan करूची कि मु okay nuclear fusion based energy plants बनेगी. Okay, United Kingdom 2040, right? अच्छा, which is the country which after this Fukushima Daiichi disaster completely changed its energy policy? Se desara aguru maximum energy nuclear ru asutila kintu ebe semane seta abandon kardele. Ko desara? That is France. Okay, France ro maximum electricity se nuclear power ru derive करतेला. But after this Fukushima and all semane tako aste aste gote gote ko decommission kariba start kare. They changed their Fukushima Daiichi गोटे आपनकर nuclear गोटे कोन सी पाखरे थिबा nuclear reactor थिला जोतोटा earthquake जोगु ओके ता reactor core रे पानी पसी गला sea water पसी गला तो सेठी तापर सेटा खराब हे गला बहुत सेटा कोन nuclear pollution सेठी हला ओके एबे भी सेटा तारो reinstatement चलछि. Next, question 10. Which country was the first to make zero emission vehicles by law effective from 2035? That is Norway. Okay. Go through that explanation. Otherwise, 1000 question hame cover up kar pariban. Okay. Which of the following statement about One Health concept is correct? So it aims to integrate human, animal, environmental health to tackle global health issues. Okay, One Health. So that health khali human health is important, no? Health of everyone. Animal rabi, our overall environment rabi. Okay, that is question 11. Then question 12. Which of the following statements regarding 2023 BRICS Summit is correct? That is, it was held in South Africa. Okay. Ebe BRICS la condition कौन? के also possible नहीं BRICS रे? और के सो possible पे जाऊँ जानती? Sir, Argentina deny करछि. Lot of other countries are now interested. Iran कथा कौन? Iran BRICS रा member है कौन? ना हुआ पे जाऊँची? Yes sir, it's a ये member. तो ebe Iran रा बेसी news सब आउची. ठीक है, IR करी कर देखिए सर. Okay, which of the following statements is true about global biodiversity framework? Okay, adopted in 2022. So it aims to halt and reverse biodiversity loss by 2030. So by कितने तक उसको targets दी चंदी सेटा ठीक है mind रे रखिए 2030. Okay. 14%. Recently, International Energy Agency released a report on global energy trends. Which of the following is not one of the findings? Sir, are not. So, एटा गोटे जिंसो exam जो माने दोचन तेसरा गोटे जिंसो देखिबे से not टा ओके से italics रे देथिबो कि either जदी italics रे दे नथिबो ताले bold करी के देथिबो हैला board टाइम रे हमरो भूल कोन हे जाय से not टा हमें skip कर ओके ताले कोन होबो ना मते चारटा जदी ऑप्शन देछि से गोटे ऑप्शन भूल थिबो जोटा not रे ठीक लागिबो जदी ओके रहला ताले बाकी तीनटा ऑप्शन करेक्ट जदी थिबो which of these are correct ताले तीनटा ऑप्शन रहे तापर से देथिबो तर कीज रे कि only one, suppose one ताला correct answer only one okay or 2 3 and 4 तो मु not ता जदी देखिबी मो आंसर हे जिवो 2 3 and 4 बुझ परते तो सेटा से not ता जो छोटो की लिखाई छोटो की तो नो बट सेटा को टिके देखिबे ओके हम जो आपण
कम्युनिकेशन रे पढुचंती ethics तो नो कम्युनिकेशन रे ओके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रे जो बायसेस अपन पढुचन कन्फर्मेशन बायस गोटे अपन पढुचन ओके आखि जनरली से देखिया पे चाहे जोटा माइंड आगुरु प्रिपेयर्ड था ठीक है तो से नॉट ता सो सपोज अपन प्रेसिडेंट चैप्टर को भलरे पढि जाइछन ओके प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमती हुए सेटा अपन 4-5 टा टेस्ट पेपर्स टू डिफरेंट क्वेश्चन करछन तेठी सेम प्रेसिडेंट को इलेक्शन ऊपर क्वेश्चन पढछ किंतु नॉट रे पढिछ which of the following is not true regarding election of president of India okay how ja jo example deli semti padi jachi question so seta tikke dekhibe take some time question 14 recently the IEA released a report on global energy trends which of the following is not one of the findings okay so B will be the answer global coal demand is expected to increase steadily until 2040 okay not one of the findings right so global coal demand is expected to increase steadily until 2040 kaiki bhul eta you can see here demand for coal is expected to decline last point ta dekhon the explanation not increase due to global climate commitments and transition to cleaner energy sources okay now eta important eta mark kar diyantu eta apna jo bhi source पढुचंती okay current affairs ro a news item ta pura details रे पढिबे that is artificial sun ठीक है तो एटा सेंट्रल जत्ते सब एबे एग्जाम्स हेची 2024 रे प्राय ए क्वेश्चन टा ऑलमोस्ट सब परीक्षा रे आछ चाइना जो प्लान करछि आर्टिफिशियल सन गोटे से बने दो okay which of the following countries recently launched artificial sun project aimed at achieving nuclear fusion okay that is China so eta details eta देखिए right next question 16 which of the following statements about Artemis Accords is correct so B tara correct answer it seeks to create a legal framework for exploration and use of moon Mars and beyond okay so you can see explanation रे देखि देबे सेटा एक्चुअली ना आपको डिस्कस करिया पे डिटेल्स रे एबे टाइम होबन तो सेटा हम डिस्कस करिया मैक्सिमम 5 डेज रे हमें अराउंड 200-250 क्वेश्चंस डिस्कस करता है रादर मु बाबूजी हमें पूरा 1000 क्वेश्चंस टा डिस्कस कर दाटा बेटर हो ओके रादर देन यू नो डिटेल डिस्कशन ऑफ 250 क्वेश्चंस तो एक्सप्लेनेशन अपन टिके टिके नीचे देखिए हम बेसी टाइम वेस्ट होबनी काना एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट ही दिया छै एमति नै कि 2 पेज एक्सप्लेनेशन दिया छै कि अपन टॉपिक टा पूरा पढि देबे ओसी ओके सो इटा अच्छी है हार्ड कॉपी आर इट बी डिफिकल्ट देयर बी लाइक 10 such questions sets पीडीएफ फॉर्मेट दिया छै ग्रुप रे ओके पीडीएफ ग्रुप रे दिया छै जो माने अपन तमन सब ग्रुप रे एक्सेस करबे ना बट जे बाहर पिला अछंती ताको भाई टेलीग्राम चैनल रे भी दिया छै ऐप रो गोटे अछि फ्री स्टडी मटेरियल ठीक है ऐप रो गोटे सेक्शन अछि फ्री स्टडी मटेरियल से थरे भी दिया छै सेटू भी डाउनलोड करता ओके so it is accessible to open okay it's accessible to all it's accessible to you it is also accessible to others right so eta dekhundu jota the Artemis Accords are an international agreement initiated by NASA to establish principles for the peaceful exploration of the moon Mars and outer space okay tapre question 17 question in 2023 which country launched the world's first government backed digital pound project okay so that is the United Kingdom okay next question 18 which of the following countries recently hosted the global food security summit aimed at addressing hunger and food insecurity so that is the US okay recently mane ye kon kochi gole eta hela first half of the year ro questions ra that is first 6 months of the year ठीक अछि so January 2024 okay to June 2024 okay so hi etre achi ei jo sets set 1 and set 2 re question 19 which of the following organizations recently launched the nature for climate initiative so that is again the United Nations okay nature for climate question 20 which of the following statements about blue economy is correct eta bhi ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ important topics okay तो first important topic जहां हमें डिस्कस करलु सेमिति तो सब important लागि मैं जोडा जेंति मु कहली
ओसीएस रे बहुत गुडे क्वेश्चंस पड़ी जीवनी यू नो आ पाई कोन करंट अफेयर्स में तेनु डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम देबेन हैला जहाँ भी हेले 10 ରୁ 15टा पॉलिटी ऊपर पड़िबो ज्योग्राफी ऊपर आपण सब से गुडे देखि जिवे इकोनॉमी इकोनॉमी टा ठीक अछि मेनली करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्विस एमती आसे बेसिक कोर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स रो टिके रिलेटिवली कम अछि बट इकोनॉमिक्स तापर बाकी आपनकर जे रहि गला ज्योग्राफी हे गला एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक से गुडा छाडिबेन सेथुरु स्टैटिक क्वेश्चंस 10टा प्लस आसीबो तेनु सेमिति 70 80टा क्वेश्चंस आसीबो करंट अफेयर्स मैक्सिमम 15 to 20 मैक्सिमम कम बेस कर ओके तो मु काली करंट अफेयर्स देखिबी ओ से श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन मोर निहाती भाबरे हबो से 70 80टा क्वेश्चन ताकू छाडिबार नै ओके सेटा मन रखियो तो फर्स्ट लिखिले आर्टिफिशियल सन सेकंड एटा लिखंतु ब्लू इकोनॉमी तो ब्लू इकोनॉमी रो टोटल कांसेप्ट कोन सेगुडा पूरा आपन पढियार अछि एठी पिन पॉइंटेड तीनटा की चारटा पॉइंट्स देछि आपन को टिके सेटा ओके यू हैव टू फाइंड दैट आपन जो भी सोर्स रु पढुचंदी करंट अफेयर्स अदरवाइज ताकू गूगल करिवे डिटेल्ड जिंसटा पाइबे ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लू इकोनॉमी इज करेक्ट सो इट इंक्लूड्स फिशरी टूरिज्म सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज ओके next 21 which of the following statements regarding WTO fisheries subsidy agreement is correct okay so it focuses on subsidies for illegal unreported and unregulated fishing okay so that is B so it okay subsidizes agreement is specifically aimed at eliminating the subsidies that contribute to illegal unreported and unregulated fishing IUU illegal unreported and unregulated ए जो फिशिंग को केते गुडे कंट्रीज अछि जेंति व्हेलिंग फेलिंग पई से माने बहुत पैसा दियंती माने कंट्रीज माने तकर बुलाबुली करिकि बुलाबुली ने लुचेई की ओके डायरेक्टली तो दे पेन सपोज कंट्री कैन नॉट से दैट व्हेल मारो मु पैसा दोछ ओके तो से माने ताको बैक चैनल थ्रू रु तकर सब्सिडीज दियंती सो दिस बेसिकली वांट्स टू स्टॉप those kind of subsidies जोटा आपनकर illegal okay जो IUU से लिखिला unreported and unregulated fishing activities okay तो से तरह any kind of fishing activities हो whale को मारिबा हो कि जाबी right so that is B is the answer it focuses only on subsidies for only on subsidies कोन subsidy टा केमति बंद करबो कि केमति कम करबो okay तो तारा फोकस है से सब्सिडीज को केमति कम करिवो then 22 which country recently became world's largest producer of green hydrogen okay so that is जो हमरो हाइड्रोजन मिशन भी अछि सेत पई so India okay आउ in fact हमरो बहुत गुडे ऑटोमेकर्स कार मेकर्स जो माने से माने बे हाइड्रोजन कार्स ऊपर भी काम करलेनी प्रोटोटाइप्स भी बाहर लानी if you would have known this our नितिन गडकरी जी ए वर्ष गोटे हाइड्रोजन पावर्ड बस इनॉग्रेट कर okay prototype ta eta but chaluchi so that means in next 4-5 years you will have hydrogen based vehicles okay eta completely clean vehicles out taro fuel initially cost will be high because research development ro cost varika rahibo but long term re seta bahut hi cheap rahibo fuel ta okay 23 ke asantu out that is one of the main reasons ki ebe dekhibe apon jete sabu OPEC countries achanti okay jo mane aguru pura tankara एटीट्यूड और ये सब पूरा थिला कि लाई हमें पूरा हम फॉसिल फ्यूल जो पर्यंत अछि हमें जहा कहबो दुनिया से मानिबो एबे ताकर आस्ते आस्ते ई सब जिंस उडा अपन जदी रिलेट करियो अलग अलग करंट अफेयर्स की इंटरनेशनल रिलेशंस रो चेंजेस संगरे ताले इंटरव्यू बेले अपन बहुत इजीली यू नो गोटे मल्टी डायमेंशनल आंसर दे परियो फॉर एग्जांपल एटी कोन होची यू सी सऊदी अरेबिया रे ताकर जे क्राउन प्रिंस अछंती मोहम्मद बिन सलमान से बहुत गुडा रिफॉर्म्स आनी एमिति रिफॉर्म्स जोड़ा कि नॉर्मली के एक्सपेक्ट करन नथले कि सऊदी अरेबिया आनी कने से माने जानि लेनी कि एतिकी दिन भीतर हम तेल सरी जो रेट रे हम एक्सप्लोर करू ओके एक्सप्लॉइट करू तेनु से सब ता पर कोन हो हम ताऊ किछ नै ओके तेनु एबे से माने बाकी लॉजिस्टिक्स हैला ट्रांसपोर्ट हैला सर्विसेज हैला ता ऊपर फोकस कर अच्छा ता ऊपर जदी फोकस करिए बाहर लोक काई कि आसीबो अपन देश जदि आपन देश रे सिचुएशन ता कंड्यूसिव नथियो आपनकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नथियो सेटा तो किंगडम छडंदो ओके तेनु सेगुडा भी से माने आस्ते आस्ते फ्रॉम ए रेडिकल कंट्री ओके टू ए मोर एक्सेप्टेबल कंट्री जस्ट लाइक यूएई दुबई करी ओके एबे अपन देखिबे मोस्ट इंडियंस आपन फ्रेंड्स भी बहुत थिबे
से माने यूएस जीवा पे पसंद करना से दुबई जीवा पे पसंद यूएई कहीं ना सपोज आप 30 वर्ष काम कले काली की आप ओएस अफसर हे आप जा 30 इयर्स की 35 इयर्स जहाँ भी आपंकर रहा डिपेंडिंग ऑन को एज रे आप पोस्ट वट एवर यू आर गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक आप तो फर्स्ट रू ही 30% ब्रैकेट रे आसिबे ग्रुप ए सर्विस गुड़ा ओके 20% तो लाइफ रो एक्चुअली अर्नड जो आपंकर सैलरीज की जहाँ भी आपंकर इनकम अच्छी तार 20 to 30% तो गवर्नमेंट नहीं गला डायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली सेटा 20-30% नो ताटू बहुत अधिक ओके केमिति अधिक सपोज आपन सैलरी रु आपन गोटे फिक्स डिपॉजिट कले ठीक अछि फिक्स डिपॉजिट रो सोर्स ता कोन सैलरी सैलरी ऑलरेडी टैक्स रे जे इकोनॉमिक्स रो डिटेल्स रे पढेबी सैलरी ऑलरेडी टैक्स एट 20% और 30% टैक्स जाई कि जा बढ़ला से थ्रू मो फिक्स डिपॉजिट ता कर हैला 20000 टका हमको फिक्स डिपॉजिट कर 5 वर्ष में कर 5 वर्ष पर तो फिक्स डिपॉजिट काढुची से पुन टैक्स पे पूछता तो ठीक अछि टैक्स फ्री तो मिलनी ना राइट सो अगेन आई हैव पेड सम टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अछि यूएई रे ऑलमोस्ट जीरो टैक्स सो इमेजिन आपनकर फ्रेंड जस्ट यदि कहबा भी तापर तो सेठी वेजेस पर आवर बहुत अधिक बट सपोज से ओएस भली आ गोटे कोन सर्विस अछि से सेठी जाई कले सेम सैलरी धरंतो आपन को मिलला तांको मिलला सो एट द एंड ऑफ द करियर ही वुड बी मिनिमम 30% रिच कि ताठो अधिक होबो काइना से जदि ताको पुनी इन्वेस्ट करथबो कोठी सेटा कंपाउंड कुछ बोल मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड नाउ टू गो टू यूएई तो यूएई रे कोन ताकर ऑल्दो सेठी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स करो बट स्टिल इट इज अ वेरी टॉलरेंट कंट्री एबे बाकी कंट्रीज का भी स्पेशली जो ऑयल रिच कंट्रीज ओपेक कंट्रीज गुड़ा अच्छी से माने साउदी अरेबिया बेस्ट एग्जांपल सेति पई अपन देखो तो एबे जो वार चलची कोठी ये रे इजराइल रो वार चलची अगेंस्ट पैलेस्टाइन अगेंस्ट यू नो अदर अपन लेबनान हला सीरिया हला से थरा ये चुप है कि बस ये किछि को ना करूची रादर जेतबे ता एयर स्पेस रे माने किछि मिसाइल सब प्रोजेक्टाइल छाड़ले से ताको शूट डाउन कर दो जॉर्डन भी से कुछ परसेंट तो कथाटा हला इकोनॉमिक ड्राइव्स एवरीथिंग ओके जदि आपन को मार्केट ता बड़ आउ आगु को आपन गोटे बड़ इकोनॉमिक पावर हेबे ताले बाकी सब कंट्री से चुपचाप बाकी सब जिंस से भूली जी राइट यू सी व्हाट इज हैपनिंग विथ कनाडा बहुत 2-3 दिन हला डेउथला खाली पूरा चुप ओके निजे तार प्राइम मिनिस्टर कहूची नहीं हमें जो इनिशियली जहाँ भी कही हम पाखे एत प्रूफ ना ओके एनीवे क्वेश्चन 23 इन 2023 अपन 2023 क्वेश्चंस का आछि काहे ना एगुडा जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून रो क्वेश्चंस फर्स्ट 6 मंथ्स सेति में मु कहली जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ए जो 3 मास रहला अक्टोबर 27 रो अपन परीक्षा ए 3 मास रे बेसी भल रे देखि तो केते सेटा कवर हिच भी अपन 1000 टा क्वेश्चन सेटा भी कवर हो ओके so in 2023 which country launched the world's first 6G satellite into space so that is China okay then which of the following statement is true regarding Indo-Pacific economic framework so that is C Indo-Pacific economic framework aims to strengthen economic ties among Indo-Pacific nations focusing on digital trade clean energy and supply chain resilience okay supply chain resilience माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय supply chain resilience जोटी गोटे इंटरनेशनल सप्लाई चेन अछि ओके सेठी जदी किछि गोटे डिसरप्शन होछि फॉर एग्जांपल व्हीट सप्लाई यूक्रेन वार पई दुनिया सारा व्हीट सप्लाई डिसरप्ट हे छि ओके तो कटार वाटार रे सने से ब्रेड ही कांती सब से पटे जो से ब्रेड बेस्ड लोक से ताको मुंडो खराब काना से माने इंडिया टू जदी नौचंदी ओके तो तार प्राइस गोटे अलग अछि से माने आगुरु यूक्रेन नौथिले ता प्राइस अलग थिला ओके तो आम इन द सेंस सेटा भल रहउची बट देन आमको भी प्रॉब्लम होची कना इनकी तो नो कि आमे भी बहुत गुरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पई ता ऊपर डिपेंडेंट थिल ओके सो एटा हला सप्लाई चेन ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जदी गुटे गुटे युद्ध होय गला सपोज एबे इजराइल तो करिनी बोते आज काली तो कोन गुटे करिरो जाबी से ईरान रो ऑयल एसेट्स को अटैक कर दला ठीक है ऑलमोस्ट 40% ऑफ ईरान ऑयल एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गला ताले हम अफेक्टेड हो global oil supply chain will be affected so resilient supply chain माने कोन ना ए जो disruption जदी भी हला ओके अलगा बाटा थी ठीक अछि हमें जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी कहउछु चाइना रा
तार गोटे बड़ ऑब्जेक्टिव है एटा ओके लॉजिस्टिक रेजिलियंस कि जदि गोटे युद्ध इंडिया संगे रहला इंडिया तार दीटा ब्लॉक कर देला दीटा तार ट्रेडिंग रूट तो आउ 10टा ट्रेडिंग रूट तार अछि दुनिया संगे तो तार सेमति बेसी किछि लॉस होबार नहीं okay that is the main intention. Question 25 ko asantu which of the following countries is set to launch world's first space based solar power station okay that is China. Which of the following countries led the initiative to establish loss and damage fund for climate change adaptation at COP27 okay to the 2022 re that is Germany. तो जर्मनी एतरे बेसिकली कोन सी लीडिंग रोल भी नउची आ सी बेसिकली कोन करछि ना पैसा भी बहुत से स्पेंड करछि which country recently unveiled a national AI strategy aimed at becoming a global leader in artificial intelligence by 2030 so जोटा मो एग्जांपल दोतरी सऊदी अरेबिया apart from oil से एबे अलग जगह को डाइवर्सिफाई करछि okay next which country recently became the first to approve the use of malaria vaccine R21 matrix M okay that is Ghana okay particularly Africa the vaccine was developed by University of Oxford and showed promising results in clinical trials with high efficacy in children. Other countries including Nigeria and India are expected to follow suit in approving and administering the vaccine okay next 29% which country recently launched the One Future initiative as part of its presidency of the G20 so that is India. In 2023 which of the following region became the first in the world to pass a law requiring installation of climate friendly solar panels on all new buildings that is California okay US California state right 31 which of the following countries recently hosted the first ever global offshore wind summit okay that is India तामे wind energy okay ता पई भी हमें बहुत फोकस करू छु काना ता पई भी हमरा बहुत कहि परिबा इंफ्रास्ट्रक्चर आउ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट अछि हमर पोटेंशियल अछि किंतु wind रे कोन ना you have to have lot of investment okay तापरे 32 को आसंतो which country recently became the first to approve the CRISPR gene editing treatment for a genetic disease so that is UK एटा लेखो तो नेक्स्ट नंबर 3 CRISPR technology एटा लास्ट ईयर रिपोर्ट थिला यूपीएससी रे भी दिवर्ष होला पढछ एटा हैला CRISPR CRISPR technology एटा साइंस एंड टेक रे तो सर भी देखो रे पढैतले एटा बट आपण एटा पूरा डिटेल्स सारा देखिबे CRISPR technology एटा नेक्स्ट इंपोर्टेंट तो एट द एंड ऑफ द 1000 क्वेश्चंस आपण को एंती 30 टा खंडे टॉपिक थिबो ओके सेटा important topics ताकू मेंस में भी रखिस बे मेंस में भी दरकार हो प्री पे तो जहां भी दरकार okay so next 33 which of the following countries recently launched the golden methane pledge to reduce methane emissions by 30% by 2030 that is US next 34 in 2023 which organization released the global plastic output report okay so that is Organization for Economic Cooperation and Development OECD okay OECD sorry tapare 35 ko asanto which country recently signed the Abraham Accords to normalize relation with Israel in 2023 that is Oman okay Abraham Accords eta international relation re apun ko jodi Israel ro problem or solution bujibar अछि then you have to know what is Abraham Accords okay to gote country normalize करू जति ता संगे relation Oman कला okay Saudi कर दी आगुरु तो गोटे कंट्रीज सेटा करूछन राइट अगेन सेटा आईआर रे आपण आउरी डिटेल्स रे पढिबे even in this gesture that normalizing relation with Israel again there is a Shia and Sunni divide ठीक अछि which you will see then 36 question to which of the following organizations launched the green bonds market development initiative in 2023 so B is the answer Asian Development Bank. Which of the following countries recently introduced the Clean Energy Demand Initiative to accelerate the adoption of renewable energy? So, United States. Okay, B is the answer. Which country launched the Digital Cooperation Organization to promote digital cooperation, economic cooperation among developing countries? That is Saudi Arabia. It will be important mark for them. Okay.
39. Which of the following countries recently became world's largest producer of electric vehicles? That is China. Okay, ଏବେ ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ତାର କିଛିଟା ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଆସିଗଲାଣି. Okay, ଆସୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲସ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଯେମିତି ସେ BYD ହରିକା ସେଗୁଡା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ. Okay, ଏଇ 2-3 months ହେଲା ଆସିଛି. Right. So question 40. Which of the following nation became the first to issue a digital sovereignty law aimed at protecting its citizens' data in 2023? That is Brazil. 41. Which of the following countries became the first in the world to introduce a digital nomad visa for professionals to work remotely? This is after the COVID pandemic. तो लोक माने किए घरे रही किए तो एमती यूरोप करिकारे तांकर सेठी बड़ बड़ कंपनीज लाइक इंटेल एंड ऑल दे आर अलाउइंग यू वर्क फ्रॉम एनीवेयर. तो जो माने बहुत ही स्ट्रेस रे अछन से कोन करछन ना इंटरनेट कनेक्टिविटी खाली रहउची से माने तांकर ट्रैवल करछन बुलुछन. ओके, एंड से माने सेउडू ही काम करछन. So one of my friends, से earlier India Bangalore रे थिला, एबे से यूरोपियन यूनियन रे पोस्टेड. से एवरी वीक गोटे नुआ देशरू से तार काम करछ. ओके, ताकर जो Airbnb हरिका अछि. ओके, हम एंदी ओयो रूम्स न ताटू टिके आउ इनफॉर्मल सेडा से Airbnb बुक करूची. इंटेल पेज वेरी हाई. तो से माने every week from different locations he is working. Company is happy with that. Okay, so देशो हिसाब से किएडा कला. Okay, so that is Croatia. Okay, C is the answer. That is Croatia. Digital nomad. You know what is a nomad? There are किसी से बुलुता है सब बड़े जा वर. हाँ, तारा किसी fixed location नहीं. Okay, so Croatian companies, okay, by law they are now allowed कि से माने जदि you know remotely जने काम करूची और से क्रोएशिया को आसिला भी ताको वीजा आराम से मिल जिवो. ठीक अछि. अपन जते गोटे अलग देश को अप्लाई करछन, यू हैव टू अप्लाई फॉर व्हाट काइंड ऑफ वीजा यू वांट. मु जदि बुलिया पे जाउची तो टूरिस्ट वीजा पे कहबी. बिजनेस पे जाउची बिजनेस वीजा अलग अछि. ओके, तो पॉलिटी रे जेमति अपन पढुछन ना इंडिया रो आवर डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप्स. राइट, केतेटा वे अछि इंडिया? हां, पांच ना छ माने से आसाम अकाउंट को मिसेले छ. ठीक अछि. In many countries, there is a concept of citizenship by investment. मो पाखरे 100 कोटी टंका अछि. मु जाई कि पहुंचबी कहबी मु इन्वेस्ट करी 100 कोटी टंका इमीडिएटली सिटीजनशिप मिलला. ओके, आउ केते जगह रे अछि सिटीजनशिप बाय मैरिज. फिनलैंड वरिका. ओके, सेठी पुओं को संख्या बहुत कम. सो इफ ए बॉय गोज एंड सेज दैट ठीक अछि मोटे फिनिश जो को. ओके, आगुरु सेटा बहुत इजी थिला. एबे ई सब इमिग्रेंट्स माने जो प्रॉब्लम करछंती से माने एबे टिके सतर्क होई गेले. से देखुछंती क्रेडेंशियल्स को कोन आछि तार ये कोन. ओके, सो सेवडा सब देखुछंती. राइट, ता मान नो कि जेना से जे पहुंच गेले अलाउ कर देबे. राइट, त लोक कम आउ रिसोर्सेस बहुत. सेत भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स रे अपन देखिबे फिनलैंड नॉर्वे ये सबले बहुत आगे रे थान. 42. ओके, नाले सेमति न पले कोन ना हमरो अधा तो यूडू ही पळेबे. राइट, इंडिया रो आमठू आगे भी अच्छी कोठी से बांग्लादेश रू से तो पूरा देश उठी पड़ेबो तांकर. तो सेतमे सेगुडा से माने टिके एबे देखुछन. ओके, which of the following is the first country to launch a central bank digital currency? Okay, that is Bahamas. अरे नहीं एटा आगु को अपन तो सोशल इश्यूज रे पढुथिबे. ओके, प्रोजेक्शन हला हमरो जो डिवाइड टा रहउची सेक्स रेशियो रो. ओके, सेटा गोटे टाइम एमती आसीबो कि इधर एलिजिबल पार्टनर्स मिलिबेनी. ओके, तो ताकू देखि देखि कि लोक माने फ्रस्ट्रेटेड हे कि लोक माने मेनली कहया को गले हमरो सोसाइटी रे बेसिकली मु मेल को कथा कहूँ. तो से माने सब नुआ नुआ सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करिवे कि नुआ नुआ सोशल प्रोसेसेस डेवलप करिवे जेमति कि सोलो गेम. ओके, 10-15 वर्ष होला जॉब अच्छी सब अच्छी किंतु झियो ही मिलुनांती बाबा पे. तो करिबी कोन निजो को ही बई जी. हैला, तो सोलो गेम ही गला. आउरी भी खाली तो सोलो गेम ही तापर आउरी भी बहुत व्यवस्था अछि. हरियाणा रे जेमति हुए महाभारत रे जा हेतला. राइट, सेमति भी होची लैंड बंचे पे जानचंदी कि नहीं. हां, ओके, 5 ब्रदर्स गोटे फैमिली बड़ एग्रीकल्चरल लैंड अछि 100 एकर.
ठीक अछि जदि हिंदू लॉ हिसाब रे बाहा हेबे ताले डिवाइड ही चलिबो ओके जदि पांचटा पिला अछंती सो हमर हिंदू लॉ हिसाब रे हेबे मेन और वुमन माने डॉटर्स एंड सन्स इक्वल अपन प्रॉपर्टी मिलला तो पांचटा जदि तांकर पिला अछंती सन्स एंड डॉटर्स तो 100 एकर डिवाइड हे वाला पांच को 20 एकर रहला तो एमती आस्ते आस्ते फ्रैगमेंटेशन है से माने कोन करंती इन सर्टेन कास्ट व्हाट दे बेसिकली डू इज द 5 ब्रदर्स की जा जेती मदर्स अछंती से गोटे जीव को ओके सो एगुडा डिटेल्स आपण एतले पढिबे कोन जोटा सोशल इश्यूज गरिका मेंस में तो बेसी इंपोर्टेंट सेगुडा से टाइम रे देखिबे ओके आउरी भी माने नॉर्मली जोड़ा हमें सुनु सेमिति भी व्यवस्था अच्छी एई जो जिनसोडा एपे ओके नॉट गेटिंग एलिजिबल ब्राइड्स नॉर्थ ईस्ट रे जोठी मैट्रिलिनियर सोसाइटीज अच्छी माने मदर टेक्स द डिसीजन राइट तांकर जेमति हम डाउरी कहउछु एठी नॉर्थ इंडिया ये रे ओके तांकर सेमति जे ग्रूम सीए ब्राइड प्राइस गोटे ताको ब्राइड प्राइस को ओके ग्रूम हैज टू पे द ब्राइड प्राइस एटा तांकर बहुत आगु चली आछि नाउ गोटे हम पढुथिबे डिफरेंट मैगजीन्स तो गोटे भलो मैगजीन अछि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली तार गोटे आई थिंक जुलाई की जून एडिशन रास्तेला ओवर लास्ट 10 years that has gone up by almost 10 times माने गोटे पुओ को गोटे झियो को बाहा पई नॉर्थ ईस्ट रे जदी 100 टका ताको दवा पे पड़थला ब्राइड प्राइस एबे ताको 1000 टका दवा ओके सो दैट इज द थिंग तनु गोटे पॉइंट आसीबो ता पे पैसा ही नथिबो सेति राइट तो से भी सेंति किछि गोटे भाबिबो इट इज कल्चरल okay you know that many of our laws are not applicable to some of the states in northeast tankara culture takor tribal ye टिके अलगा सेमती मैट्रिलिनियर सोसाइटीज अलगा जगह रे भी अछि जेमति कि केरला रे ओके केरला रे also they have a particular system within hindu law जोटा कि सेटा मैट्रिलिनियर सोसाइटी सेठी भी सेया हो ओके the groom has to pay the bride ओके पुओ को जियो फैमिली की पैसा देवा पे पड़े राइट एनीवे सो which international organization recently launched global digital compact to promote digital cooperation so that is UN already eta thare dekhilu which of the following countries launched the blue revolution initiative to promote sustainable marine and aquaculture development that is India eta different countries different name re question in 2023 eta भी गोटे hot issue आपनकर मेंस में भी एटा इंपोर्टेंट रहइबो व्हिच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज व्हिच इज जनरली नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कांसेप्ट ओके यूरोपियन यूनियन रे जिनसोडा बेसी बोता गुर हे जाय सो द फर्स्ट ओके एशियन कंट्री हला ताइवान जे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर ठीक है तो लीगलाइज कर एठी हमर इंडिया रे कोन है सेम सेक्स मैरिज हैज बीन decriminalized इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स नॉट लीगलाइज्ड ठीक है तो बाय लॉ इट इज नॉट अलाउड ओके जोटा कि एबे प्रेशर पडुची कि निहाती भाबरे करिया कथा डिफरेंट ग्रुप्स प्रेशर पकोजती बट करंट गवर्नमेंट जे क्लियरली कहि दै छी हम थिला पर्यंत भूल जाओ ओके होबार चांस है राइट सो नहीं माने सेटा से क्लियर कर दै छी भलो जहां को दरकार से तांको वोट देबेन और जहां को दरकार नहीं से तांको ही वोट देबे राइट सो दैट पीपल विल डिसाइड 45% in 2000 तो कटा वाला that is Taiwan 46 which of the following countries became world's largest exporter of LNG in 2023 that is the US 47 which organization launched AI for global food summit to explore how artificial intelligence can benefit humanity that is the ITU International Telecommunication Union okay next which of the following countries signed a comprehensive economic partnership agreement with India in 2023 seta UAE abitar roibo which country recently hosted summit for democracy to promote democratic governance globally that is US you know how US रे elections implement चंदी केबे हबो ताकर election presidential election आपण माने जतरे वोट दै चंदी
ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ 2-3ଟା ଲୋକ ବସିଥିବେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ କି କଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସତର କରନ୍ତି କି ନାଇଁ କଣ ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତି ହଁ ସେମ୍ ଲୋକ ଅଛି କି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ୟୁଏସ ରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥାଏ ରାଇଟ୍ ତ ତାଙ୍କର ୟୁ ସି ହାଉ ଭୋଟିଂ ଇଜ ଡନ୍ ଇନ୍ ୟୁଏସ ଓକେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଇଏ ତ ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ଏମିତି ବେଙ୍ଗଲ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲ ନୁହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ଲିଗାଲାଇଜ ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ହେଇଛି ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇଡି କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଓକେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଦ ନେଟିଭ ମାନେ ଆମେରିକାନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗଲୁ କି ଆଉ କିଏ ବାହାରୁ ଯାଇକି ରହିଛି ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପୋଲିସ ପଚାରିବ ଆପଣ କିଏ ଆଇଡି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟକିନି ଆଇଡି ଟା ଦେଇଦେବୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ କିଏ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଇଡି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୁଫ କର ତାଙ୍କର ସବୁ ଲ ବି ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଓକେ ତ ଏନିୱେ they're in a sense they're very aware about their rights. Question 50 ke asandu. Which of the following organizations launched the Global Health Security Index to assess countries' ability to respond to pandemic? So that is the John Hopkins University. Which of the following countries recently announced its green growth strategy to achieve carbon neutrality by 2050? That is Japan. So it is just like the carbon neutrality 2050 Japan. Okay. Next 52. In 2023, which of the following countries launched the Global Gateway Initiative to counter China's Belt and Road Initiative? So that is European Union. So এটা টিকে সাইডে লিখি দিয়ন্তু BRI we all know এটা আমার ইয়েরে বি পড়ুছি কোন ইন্টারভিউরে বহুত জন পচারাইছি Global Gateway Initiative, that is European Union's response to BRI of China. Okay, তারপরে 53 ke asandu. Which of the following countries recently launched Mission Life initiative in collaboration with India to promote sustainable lifestyle? That is United Kingdom. Okay. Then 54. Which of the following countries recently introduced the carbon border adjustment mechanism to regulate carbon emission on imports? Okay, that is again European Union. So CBAM eta tike likhi diyantu. CBAM ro concept ta tike padibe. Carbon border adjustment mechanism. Okay, related to the European Union. Next, 55. Which of the following countries recently hosted the second UN Ocean Conference focused on ocean sustainability? That is Portugal. Next, which of the following countries recently introduced world's first tax on cryptocurrency transactions? That is Indonesia. Okay. ଏବେ କେତେ कंट्रीज କହିଲେଣି କି ଆମେ 50% टैक्स ବି ଲଗେଇବୁ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଉପରେ जो रेट रे से बढ़ुची कि जो रेट रे तारो फ्लक्चुएशंस होची ओके 50% टैक्स if you trade in cryptocurrency and you earn whatever you earn 50% government needs you India रे तो legally no set okay so the RBI is working on mechanisms to how to कारण RBI रो main problem हो सबु जो central banks होची दुनिया रो cryptocurrency संग तांका main problem कोन there is no physical base ओके गोल्ड हैला ऑयल हैला किछि कमोडिटी हैला सपोज आपण गोल्ड ऊपर ट्रेडिंग करछन गोल्ड रो फिजिकल बेस अछि 1 केजी गोल्ड रो कॉस्ट एति 10 ग्राम्स गोल्ड रो कॉस्ट एति क्रिप्टो करेंसी रो वैल्यू कोन वी डोंट नो ओके इट इज ए काइंड ऑफ मिथ इन द सेंस दैट हमें गोटे अजम्पटिव वैल्यू तार लगे एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी रो हार्ड वैल्यू कोन क्रिप्टो करेंसी कोन देखि ना कोन इट्स कंप्लीटली वर्चुअल कांसेप्ट तेणु तार एते अधिका वैल्यू हे गलानी कोदिनो क्रैश करिवो तो लोक माने होइना नहीं बट मेनी यूरोपियन कंट्रीज दे आर से माने ताको लीगलाइज करके सेथरे काम दाम भी करछन ओके जेंति हमें यूपीआई रे पे बाय यूपीआई हमको बहुत सुविधा होची सेमति यूरोप रे बहुत कंट्रीज रे पे थ्रू बिटकॉइन्स अछि ओके इफ यू आर हैविंग बिटकॉइन्स यू कैन पे थ्रू दैट so anyway era Indonesia haba okay next 57 which country recently launched a pilot program to use hydrogen powered trains in its public transportation system that is Germany. Which country introduced the first AI law to regulate the ethical use of AI technology? So that is European Union. Okay. Which of the following countries launched the clean hydrogen mission as a part of its national energy strategy in 2023? So that is India. Question 60 ke asandu. Which of the following countries became the first
to announce a digital currency insurance policy for its central bank digital currency, that is Bahamas. Okay, जो हमें tax havens कथा कहूँ Bahamas आ गए, right? So अपन जो business करें अच्छी Bahamas को बोले सेठी पाखापाखी, okay, just like this Canary Islands and all, सेठी the tax नहीं, right? And country of beaches, right? तो सेमती lifestyle जाको भल लगे सेठी जाएगी business start करी परियो, ठीक है? जो धरंतु क्रिप्टो करेंसी मो पाखरे 10टा क्रिप्टो करेंसी अगर क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल करेंसी रो बहुत मीनिंग्स अछि तब तो क्रिप्टो करेंसी एनी टाइप ऑफ करेंसी व्हिच इज इन वर्चुअल फॉर्म हमर डिजिटल रुपी अछि आरबीआई रो ठीक है सेटा डिजिटल करेंसी बट दैट इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी ठीक है तो क्रिप्टो करेंसी जोड़ा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेही टाइप रो टेक्नोलॉजी संगे रिलेटेड अछि आमे जनरली बिटकॉइन कहिछु तापरे ताको एथम भी अछि अलगा भी बहुत गुडे अछि तार ओके एबे तो बहुत गुडे डेरिवेटिव्स भी तार हे गले ओके सो सेठी कोन होछि सपोज आपन बिटकॉइन हजि गला एबे बहुत न्यूज़ आपन सुनथिबे का हार्ड ड्राइव रे थिला 100 टा बिटकॉइन एबे से मल्टी मिलियनर हे की बसतांदा से पोपाडी देला हार्ड ड्राइव 5 वर्ष आगो राइट तो सेतेबेले असुविधाटा होछि जदि मु ताको इंश्योर कर देतांती मते पैसा मिल जेता राइट तो सेटा हला insurance of digital currency. मुझे example देले that is insurance of cryptocurrency. Some countries allow it EU रे किछि countries तक allow कर 61% which of the following statements regarding the Basel III norms is or are correct. Basel III okay that is all of the above statements. So Basel III norms are international regulatory framework developed by Basel Committee to strengthen regulation, supervision and risk management of banks. Under Basel III, banks are required to maintain a common equity tier 1 capital of 8% of their high risk weighted assets. Basel III introduces a counter cyclical capital buffer to protect the banking sector in periods of excessive credit growth. All of the above statements. So all of the above is correct. It next important it likh okay Basel norms and recent changes. Basel norms and recent changes. It current affairs ro bhi economics ro okay. Next, 62, regarding the Indo-Pacific Economic Framework, which of the following statement is correct? So, India is a founding member of IPEC but opted out of the trade pillar. It founded it, but se jo taro jo trading re jo misiba kotha ki jota sethre join kariya kotha seita ame karino. Okay. Due to concerns over market access and potential impact on domestic industries, that is why we okay did not join. So it focuses on 4 key pillars: trade, supply chain resilience, clean energy, decarbonization, taxation and anti-corruption. Okay, so eita bhi asi paribo gote question, which of the following okay are the frameworks of IPEF? So for all questions just go through the explanation also. 63%, which of the following statements about global minimum corporate tax initiative is correct? The initiative proposes a global minimum corporate tax rate of 15%. Anyway, so answer tarahela both A and B are correct. The initiative proposes a global minimum corporate tax of 50% to prevent tax-based erosion. Okay, it was spearheaded by G20 and has been agreed upon by 140 countries. So, 15% minimum. Okay, global minimum corporate tax rate. Okay. India रे तक हम कौन पूछो इकोनॉमिक्स में हम पढ़िया मैथ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ठीक अछि माने बहुत गुडे देश बहुत गुडे हमरो लॉज एमती अछि कि तार बहुत गुडे एक्सेप्शंस को नै कि किछिटा बिजनेसेस किछिटा कंपनीज से जीरो टैक्स रे भी चलन ओके दे हैव एक्सप्लॉइटेड द लूप होल्स ऑफ द लॉ इनकम करूछंती एक्चुअली टैक्सेबल होबा कथा किंतु एही एक्सेप्शंस को देखे देखे तने किछि टैक्स दियंती राइट सेति पई गोटे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स थाय जदि आपण कोनोसी लॉ रे भी स्टैट्यूट रे भी टैक्स पडुनी आपण कंपनी रे आ आपण एतिकी अर्न करूछंती ताहले मिनिमम आपण एतिकी टैक्स ओके देन regarding the recent developments in quadrilateral security dialogue quad, which of the following statement is correct? So B is correct. That is, the quad has launched a vaccine initiative to supply COVID-19 vaccines to the Indo-Pacific region.
Okay. 65% though. Which of the following statements regarding Ramsar Convention is correct? So both A and B, that is, it is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. Okay, Ramsar ta kouti hochi? Europe re. Iran. Ramsar gote city na right? Kouti hochi? Sir, Iran re sir. Iran. That is correct. Okay, Iran re hochi seta. Acha, Iran ta Europe ro part. Will Iran be a part of Europe? Huh? Middle East ro part hobo. Acha. Kazakhstan, Uzbekistan, Central Asian sir. Europe ro part Those are, hobo. sir, Central Asian sir. Central Kazakhstan. Asia. Acha. Russia, Sir, Russia partly in Europe and partly in Europe ro Asia. part Sir. hobo. Sir, both Europe and Asia. अच्छा ताले यूएसएसआर जो थिला आगुरु सेटा तो से हम कहली जो टेक्निकली कजाकिस्तान ओके आउ ये उज्बेकिस्तान ठीक अछि एगुडा सब आपण तको यूरोप कहबे कि नहीं विल इट बी यूरोप ओके देन वी विल सी दैट सो रामसर ठीक अछि ईरान रे ओके अच्छा एटा इंपोर्टेंट लिखि दियंतु सेटा ये सबले चेंज होता है तेनु पूरा एग्जाम आगु अपडेटेड जिनसटा देखि जिवे ओके इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखंतु रामसर साइट्स तो आपण पूरा लास्ट जते बेले जाउछन एग्जाम को 5 दिन आगु देखि देबे ओके कोन अपडेटेड स्टेटस ता सो एटा ए इज करेक्ट The Montreal Accord under the Ramsar Convention lists wetlands of international importance facing degradation. तो क्वेश्चन ओपीसी रे एमती आसीबो कि लास्ट एंट्री टा कोन थिला इंडिया रो ठीक अछि एटी गोटे क्वेश्चन अछि सेमती बट सेटा आपण लेटेस्ट देखिबे लाइक 27th रे एग्जाम अछि 23 24 अराउंड ओके देखिबे मूवी थरे ताको हमें डिस्कस करदा क्लास एटा गोटे क्वेश्चन जोडा आसी पारे तापर फैक्टा एटा भी लिखंतु इंपोर्टेंट फैक्टा इज इंपोर्टेंट ता आगु पढि जिबी आगु भी पढि पारे with reference to the financial action task force which of the following statement is correct मुझे कुछ इंपोर्टेंट तार खाली एक्सप्लेनेशन देखिबे जदि आपण कांसेप्ट जान नांती जंती कि फाटाटा हमें कहीं सोडे फॉलो करू से पाकिस्तान को ओके तार से प्रोहिबिटेड लिस्ट रे ओके रखि छि कि नहीं ग्रे लिस्ट रे रखि छि कि नहीं ठीक अछि जदि बाहरी गला ताले ताको बेसी फंडिंग मिलिबो राइट सो with reference to financial action task force which of the following statement is correct that is B that is FATA places countries on its grey list or black list based on their compliance and anti money laundering standards आउ जदि सेथरे रखि देला ताले ए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हला वर्ल्ड बैंक हला ए माने आउ प्राय लोन सोन्स आपन को देबे ओके सो एटा की को कंट्री सब थांती जो माने बेसिकली ड्रग ट्रेडिंग रो हब थांती किबा फाइनेंशियल टेररिज्म रो हब थांती जो बाटरू पैसाटा रूट हेकी जाउची टेररिज्म पे ओके सो दैट इज बी इज करेक्ट फाटा places countries on its grey or black list based on their compliance with anti money laundering standards okay so seta dekho India status fata India is not on fata's blacklist rather countries like Pakistan and North Korea have been subjected to fata's scrutiny okay तापरे आईएसए तो एटा भी इंपोर्टेंट एटा भी लिखो आईएसए ऊपर आगु भी क्वेश्चन पड़छि जेतु इंडिया एटा स्टार्ट करथिला गोटे पेट प्रोजेक्ट करेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा तेनु एटा भी इंपोर्टेंट अछि इंटरनेशनल सोलर अलायंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके बी एंड सी बोथ मेंबरशिप ऑफ आईएसए इज ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन ओके ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन नॉट ओनली जो माने ट्रॉपिक्स रे अछंती किबा जो माने आपनकर कोन हम सोलर रिच कंट्रीज जाउ ओके जहां सोलर रेस तो से सोलर रेस को मैं कौन कहूँ और टर्म अच्छी ना पढ़ते ज्योग्राफी हाँ इंसुलेशन अच्छा तो से तंगर बेसिकली जो माने प्रॉपर सोलर एनर्जी पाउचंदी से माने खाली नुह ऑल कंट्रीज ऑफ यूएन कैन जॉइन ओके देन सी इज आल्सो करेक्ट ISA aims to promote the use of solar energy by facilitating finance and deployment of solar technologies जेमती कि तार एग्जांपल हैला गुजरात रो विलेजेस रे अफ्रीका रु आसी कि वुमन माने सोलर सेल बनेबार
केमती घरे बनै परिबे से माने तार से माने दे आर टेकिंग द ट्रेनिंग ओके एंड दे आर गोइंग होम और सेठी ताकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट अछि जेमति कि स्ट्रीट लाइट टाइप रो सेगुरा से माने बनै कि कोजन के ताको गवर्नमेंट पाखरे सेमिति इंफ्रास्ट्रक्चर नाही कि जेमति आमो विलेजेस रे इलेक्ट्रिफिकेशन कर दो कोन कर सेटा से माने एटलीस्ट तो 5-10 वर्ष बंद कर परिबे ओके इवन दो खाया वरिका भी सप्लाई कराउची बाहर ओके सो से हिसाब रे सो दैट इज very important so that is also under the ISA okay इंडिया छोड़ा आउ की लीडर थिला से इनिशिएटिव ISA France. two countries started it India and France sir. France. France रो सेटा गोटे फ्रेंचाइज 68 को असंतु which of the following statements about global economic facility GEF is correct okay that is GEF is a financial mechanism for several major international environmental conventions okay global environment facility then 69 regarding the strategic petroleum reserves of India which of the following statement is correct okay that is India's SPR is managed by Indian Strategic Petroleum Reserve Limited the SPR facilities are located at Visakhapatnam Mangaluru and Padur okay so B and A both are correct right which of the following statements about currency swap agreement is correct eta lekhan important currency swap agreements okay so all of the statements are correct on this statement currency swap agreement allows two countries to exchange their currencies at a predetermined rate to facilitate trade and investment currency swaps are designed to stabilize foreign exchange markets by eliminating currency risk. India has a currency swap agreement with Japan amounting to 75 billion. Okay, so all of these are correct. Next, 71. Which of the following correctly describes the Debt Service Suspension Initiative, DSSI, launched by G20 in response to COVID-19 pandemic? So COVID-19 जो वो business करेगा बंद होगा तो जो countries माने loan फोन नहीं चलती से माने लोन को सर्विस केमती करियो इंटरेस्ट केमती पे करियो प्रिंसिपल केमती पे करियो तापर तो बिजनेस होनी ना तो सेटा टिके डिफर करा हला जेमती एठी भी इंडिया रे आपनकर मंत्र गोटे मोराटोरियम गवर्नमेंट कर देला जो माने लोन रो ईएमआई पे करथले से टाइम रे ताको कहला जो पर्यंत सिचुएशन ठीक नहीं 5 मंथ 6 मंथ 8 मंथ तुम्हें सेटा स्टॉप कर दे परियो ओके सो हमें भाबिलु बढ़िया रिलीफ मिलला बट रिलीफ किछ मिललन से एती कथा हला कि से ईएमआई बंद होला ओके इंटरेस्ट लेन से माने से 8 मास जोटा बंद है कि 5 मास जोटा बंद है तापर इंटरेस्ट ऐड होगा गवर्नमेंट कहि कहि रहि गेला कि हां हमें देखिबु कोन करिया कि आज पर्यंत देखि करलेन ओके थर्ड टर्म रे आसी गेल बहुत लोग सेत में भी रखि थिले ओके ठीक अछि अथरा आसी गेल का कथा बट रिलीफ टा मिलला ईएमआई वाज स्टॉप दैट मींस यू डिड नॉट बेसिकली ता माने कोन हला यू हैव पेड मोर आपण अधिका पे करले मु 100 टका रे मो लोन सरतांते मते 125 टका दबे पड़ एना बैंक सही 5-6 मास तो नेलानी किंतु जेतोले नेला से 5-6 मास रो इंटरेस्ट मिसेला ओके सेटा से माने छाडे जदी इंटरेस्ट से माने छाड दे थाले ओके ताले यू नो जिनसोडा लोगों को बर्डन टा पड़ना था बट सेटा हेला राइट तो एति की खाली लिमिटेड रिलीफ मिलला से टाइम रे जेतेबेले पैसाटा नथिला हमकु पे करिया पे पड़ला ओके जेतेबेले पुनी रिकवर हैला पैसा आसिला जेति की दबार दिला ताटु टिके अधिका में देले राइट सो तो गोटे मिनिस्टर को पचारा हला से गोटे बढ़िया एग्जांपल देले ओके नॉर्थ इंडिया रो थिले बोते बिहार की उत्तर प्रदेश नु से कहले जेतेबेले पाखरे पैसा नथिबो मनसो जहा भी बिस्कुट पानी पी की चलिबो किंतु हठात दिन जेतेबेले पैसा आसी गला सेतेबेले जहा तार इच्छा खाइबो ओके तो से कंपेयर करथिला से कि जेतेबेले आपन भाई पैसा नथला हमें सेटा हम लोग रिलीफ कर दिलु जेतेबेले इकोनॉमी ओपन हो गला से जो टाइम टा ओके ता पई भी हमको कंपनसेट करिया पे पड़िबो एनीवे 72 को असंतु ग्लोबल मिथेन प्लेज ओके एटा थोड़ा ऑलरेडी गोल्डन प्लेज जोटा हमें कहूछु ओके तो एटा लिखंतु इंपोर्टेंट ग्लोबल मिथेन प्लेज which of the following statement is correct so B that is it was initiated during the COP26 summit and has been endorsed by more than 100 countries okay global methane pledge कौन सेटा कि methane emissions आपनकर 30% okay कमिबो 2030 रे माने गोटे डेकेड रे as compared to 2020 levels
50%, 30%. Okay. Then you go through that. Which of the following countries became the first to enact a law regulating human gene editing? That is United Kingdom. Regarding the European Green Deal, which of the following statements is correct? A is correct. It aims to make Europe the first climate neutral continent. So it a continent level by 2050. Okay, climate neutral continent by 2050. 75%. Which of the following statements about strategic compass for security and defense initiative of EU is correct? So it aims to make EU more autonomous in security measures by 2030. Strategic compass for security and defense initiative. Okay. 76. Which of the following is not one of the goals of the Kigali Agreement to the Montreal Protocol? So D is the answer. Encouraging the use of HFCs, okay, hydrofluorocarbons, as a substitute for chlorofluorocarbons. Okay, so this is not one of the goals. Next, which of the following correctly describes the Glasgow Climate Pact? Already I'm a Glasgow. Okay, Scotland, right? So it calls for phase down of coal power and subsidies for fossil fuels. Slowly coal-based electricity of coal power plants of the Bondava, how fossil fuels aste use common. Okay, which India is doing, of course. Transport minister basically, highway minister. Gadkari कहले कि आपण जदी even hybrid vehicle भी किनुचंदी, hybrid vehicle माने आपनकर पेट्रोल की जाबी fossil fuel की natural gas plus electricity. ताको कहया कथा ताकू भी हमें एते टैक्स करिवु कि it will become very difficult for the people to buy और जो माने प्रोड्यूस करछन जो कंपनी ताकर लॉस हो. तो आपण इलेक्ट्रिक व्हीकल की जहां भी आपण क्लीन एनर्जी वाला व्हीकल आपण एबे टू प्रोड्यूस करन. ओके. Which of the following statements about International Criminal Court is correct? So it a dynamic zero part no generally. Okay. So A is correct. ICC can prosecute crimes committed by any individual regardless of their nationality as long the crime is within its jurisdiction. Okay, but is it effective? ଯେମିତି କି ଏବେ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ against ରେ ସେ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ତାର ବାହାର କରିଦେଲା. But who is going to implement that one? ଆପଣ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ବସିକି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିବେନି ନା. ସିଏ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେନି ତାକୁ ଧରିକି ନେବେ. ସିଏ ଯଦି ଏବେ ଇରାନ କି ଗଲେ କି ଲେଟ୍ ସେ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରି ହବ, ସେଟା ସେ ଯିବେନି. ଆଉ ଯଦି ଯିବେ ବି କେହି ଜାଣିବେନି ହେଲା. ତ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଯାହା ସେ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ୟୁଏନ ଯେମିତି ୟୁଏନ କେତେ କଣ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବନେଇଛି, ठीक है, but countries really don't care now. You see what happened with that UN body for Kashmir. से 1947 कि just तापरे बसिचंती आसी कि इंडिया रे पूरा दिल्ली रे जगह नहीं कि श्रीनगर रे जगह नहीं कि सब बेले एठी रहिबे किंतु कथावार्ता हला ताकर नहीं एटा एमती होगा कथा न सेमती होगा सब बेले प्रो पाकिस्तान. ओके. तो 2014 रे तले मोदी गवर्नमेंट आसिले प्रथम काम हमर दरकार नहीं ऑर्गेनाइजेशन एठी दुकान मन कर चलो अब कश्मीर रो कोन करिया कथा आमे हमर बुझियो. ओके. तापरे होम मिनिस्टर कहले एटा समय कथा से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हमर एबे तो से माने कहलेनी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रे तुम केते जल्दी आमे मिसी एठी जावा दस्ताले तो खाया पे भी दोना, राइट. तो आउ किछ दिन पर से पाकिस्तान इज इन ए कंडीशन ऑफ इम्प्लोजन. ठीक है, तो बाहर किछ कहया दरकार नहीं, से निजे ही इम्प्लोड हे, राइट. बट एनीवे जाबी, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली. Which of the following statements about ICC is correct? So A is correct. Okay. Then tapare 79. Which of the following correctly describes one sun, one world, one grid? Okay. So eta be important. Eta mark kar diyantu. One sun, one world, one grid. So solar energy obviously. Okay. Related to that. So it aims to connect renewable energy grids across Africa, Asia, and Europe to promote solar energy sharing. Okay. So the International Solar Alliance achi seita hi eta promote koruch. Question 80. Which of the following statement about Paris Agreement global stocktail is correct? Okay. That is, it's a 5-year process under the Paris Agreement to assess collective progress towards achieving the agreement's long-term goal. Okay. So B is the answer. 5 years. Okay. 5-yearly process. 81. Which of the following countries launched the global methane
Emissions Observatory to track and reduce the methane emission worldwide. That is European Union. Next, data important data from disaster management environmental. Okay, regarding the CBDR, common but differentiated responsibilities principle in climate negotiation, which of the following statement is correct? Artha kona CBDR na different countries different level re pollution करछन किबा emissions को contribute करछन. Maximum US, Russia, okay, China, एमन जो सब developed already अछन यूरोप रो केते कंट्री सेमन maximum pollution करछन. Okay, किंतु सेमन already developed हे छन. एबे जते ए सब rules regulation बाहरुची डेवलपिंग कंट्रीज कहते आमर डेवलपमेंट जब करी ताले एमिशंस तो हम आमको जब आप मना करेंगे नहीं करनी डेवलपमेंट करनी तो सेटा हम मानिबो. ओके, सो समस्त कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो किंतु डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ताला बहुत गुडे प्रिंसिपल्स आपण पढिथिबे जेंति कि पॉल्यूटर पेस. ओके, जे पॉल्यूशन करिछि रिसर्च डेवलपमेंट पई एक्सेस टू टेक्नोलॉजी पई सेही पैसा दो सेति पई मैक्सिमम पैसा अमेरिका को दबा करतो मैक्सिमम पैसा रशिया को दबा. अमेरिका बेसी दौनी रशिया टोटली मना करछि किछि देबे. ओके, जर्मनी दोछि रादर सबटो अधिक क्लाइमेट फंड्स पे. ठीक अछि. सो आ भितर कोटा ठीक. सो डी इज द करेक्ट आंसर. द प्रिंसिपल अलाउज फॉर डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज based on country's historical contribution to environmental degradation. Okay, that is the CBDR. Then 83, which of the following countries signed a treaty on prohibition of nuclear weapons but has not ratified it? That is Brazil. What difference? Signing and ratification. Signing means that is an executive process. ठीक है. ये आपनकर foreign secretary की किए गोटे. Okay, government रो member. ठीक है. माने the executive के minister की किए सी जाएगी sign करे. जेतबेले सेटा legislature आपन country रो जेंति कि हमर parliament सेटा से pass कर दोछ agree कर दोछ सेटा हला ratification. जेंति हमर land boundary agreements करके थिला बांग्लादेश संगे बांग्लादेश इमीडिएटली सोटा ratify करला जो exchange of enclaves. आमे किंतु कर पारलेनु काहे कि ना सुप्रीम कोर्ट को केस पड़ेला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला. ओके, कोन ना पार्लियामेंट रो राइट अछि कि से टेरिटरी सीड कर दबो तो सुप्रीम कोर्ट कहले ना सेमिति जनरली राइट नहीं किंतु यदि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क रे किछि गोटे इंटरनेशनल आपण एग्रीमेंट करि जंदी आगुरु ताकू इफेक्ट दबा पई ताले हे परियो. सो हला हमें एक्सचेंज करू से माने भी एक्सचेंज करू कुछ पर एते दिन काहे कि लागला से तो बहुत आगुरु कर देते बिकॉज़ आवर पार्लियामेंट हैड नॉट रैटिफाइड इट. काहे कि पार्लियामेंट रैटिफाई कर नतला बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट एटा क्लियर कर दो कुछ पर दैट इज रैटिफिकेशन. आ गोटे एग्जांपल दे परिबे शिमला एग्रीमेंट नॉट द इंडो इंडिया आ भीतर नो हमर पाकिस्तान भीतर ता आगुरु जेतेबेले हमें ब्रिटिश अंडर रे थिलु तो सेतेबेले शिमला एग्रीमेंट हेतिला रशिया यूके माने इंग्लैंड जे हम ऊपर रूल करथे ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया और चाइना. ओके, ताको भीतर रिगार्डिंग टिबेट तो से माने कोन कहले ना इनर टिबेट और आउटर टिबेट. ठीक अछि. तो इनर टिबेट हमर रहइबो माने चाइना रहइबो आउटर टिबेट पूरा से हमें तादरे पॉसिबल सेटा से एग्रीमेंट गोटे सेमति हेतिला. बट एनीवे जेतेबेले से माने इन्वेड कर देले सेटा आउटर टिबेट को. ओके, नो वन डिड के भी किछ करले नहीं. इनफैक्ट इंडिया भी किछ सेतरे मुंह बोललानी. ओके, एंड वी एक्सेप्टेड दैट व्हाटएवर दे डिड. जदि सेही टाइम में मना कर दांतो ताले हमर एबे चाइना संगे प्रॉब्लम भी न थाता. ठीक अछि. काना हमर बॉर्डर ही न थाता चाइना संगे प्राय. ओके, सो समझ जा कहितिले ताकू न मानी कि they did what they wanted to do anyway. So it is Brazil. Brazil is the answer. It has not ratified it yet. In the context of African continental free trade area, which of the following statement is correct? So A is correct. The AFCFTA is the world's largest free trade area by number of participating countries. Okay. कहते हैं गोटे कंट्री की छाड़ी की 54 of 55 total countries. Okay, so that also by participation. Okay, so it is सबुठु बड़ free trade area, African continental free trade area. Next 85, which of the following correctly describes the Santiago network? Okay, under the UNFCCC. So that is, it provides technical assistance to developing countries to address climate related loss and damage.
Okay. Tapare 86%. Which of the following correctly describes the Glasgow Financial Alliance for Net Zero? Okay, that is GFA-NZ. Okay, so that is B is the answer. It aims to align global financial institutions with zero net carbon emissions by 2050. Next, 87. Which of the following statements about WTO's fisheries subsidy agreement is correct? First time illegal activities, fishing activities by unreported achi, illegal achi. Okay. How subsidies, back channel subsidies subsidies say subsidies end out. Okay, so B is the answer. The agreement targets subsidies that contribute to overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. Okay. Then 88. Regarding the Global Digital Compact proposed by UN, which of the following statement is correct? Okay, so B is the answer. The compact aims to establish universal norms for digital governance, including privacy, security, and data protection. Next, which of the following countries introduced the green classification system to track investments in sustainable finance? So, China is the answer. B. 90. Which of the following statements about United Nations High Seas Treaty is correct? So, beta is correct. It aims to protect marine biodiversity in area beyond national jurisdiction, including conservation of deep sea ecosystems. Okay. Next, which of the following statement regarding international carbon border adjustment mechanism is correct? Okay, so B is the correct answer. It aims to prevent carbon leakage by imposing a carbon price on imports into the European Union. Okay, so B is the answer. Next, 92%. Again, already which of the following correctly describes the Kigali Cooling Efficiency Program, that is KCEP? Okay, so that is B is the answer. KCEP focuses on reducing the use of hydrofluorocarbons and enhancing cooling efficiency. Okay. Next, 93. Which of the following statements about Global Compact for Migration, GCM, is correct? So C is the correct answer. India is one of the countries that formally adopted the GCM. Which of the following correctly describes the Sustainable Development Investment Partnership? Okay, so that is A. It is a multilateral initiative that mobilizes private capital to fund infrastructure projects in development countries. Okay, private capital. Which of the following countries announced Net Zero Producers Forum to promote decarbonization in oil and gas industry? That is Canada. So खाली Canada मतलब इतरे US भी थिला, Saudi भी थिला और Norway भी थिला, किंतु सी leadership नला. Canada took the leadership. Others were participants. Which of the following countries became the first to introduce a carbon negative policy for achieving net negative carbon emissions? So that is Bhutan. Okay. Carbon negative policy. Next, which of the following correctly describes the task force on climate related financial disclosures? So if TCFD provides voluntary guidelines for companies to report climate related financial risks and opportunities. Then 98. Which of the following countries launched the Global Energy Transition Index to rank countries based on their energy system performance? Okay, that is the World Economic Forum. Then 99. Which of the following correctly describes the Global Gateway Initiative launched by European Union? So B, the initiative aims to counter China's BRI by offering sustainable infrastructure financially financing globally. To debt trap for dochi China, केवल ता पाखापाखि जगह नो इवन अफ्रीका और अलग जगह भी कलानी ताकू काउंटर करिया. Okay. Last question. Which of the following countries recently launched the First Movers Coalition to accelerate the commercialization of clean technologies? Okay, so that is the US. Right. So, it is a first set. So, what you can do is, आपको revision करिवार जदि individually आपण करिवे बहुत भलो कथा. जदि group रे पढुचंती, make small groups of 2-3 people. Okay, like-minded जो माने थिबे, ताले जल्दी search हो. Then you can just discuss. Okay, this is the question. These are some of the important things. This is the answer. एटा मेंस लेवल रे डेप्थ रे दरकार नै. सेति पई
चारि पांच पॉइंट रो आपनकर रखायला एक्सप्लेनेशन ताले 2 पेज एक्सप्लेनेशन देले कोन से पुनी 300 पेज रो डॉक्यूमेंट हे जो 100 टा क्वेश्चन भाई बुझ पारे तो सो जस्ट जति की दरकार सेति की देखंतो जो जो पॉइंट्स हम कहउची बाय द टाइम वी फिनिश द 10th सेट वी विल बी हैविंग 30 to 40 टॉपिक्स सेही टॉपिक्स रो बहुत इंपोर्टेंट आउथर दर ताको देखिबार अछि तो टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनिट्स तापर हमें ओके फाइन ठीक अछि तो काली हमें सेट 2 टा देखिबा आज सेट 3 और सेट 4 टा भी अपलोड हे जिवो जो माने निजे ताको पढिबे दैट आल्सो यू कैन डू एटा कंप्लीटली ओपन अछि आपन को व्हाट्सएप ग्रुप रे मिल जाउची और अदर स्टूडेंट्स को अराउंड स्टूडेंट्स को ताको टेलीग्राम चैनल रे मिल जाउची ओके अब ऐप रे भी अछि ऐप रे फ्री मटेरियल फोल्डर को गले आपन को मिल जाउ ओके we'll stop here take a break for 10 minutes 12:15 रे we'll start for those who are giving exam next year ठीक अछि तांको पे ओके सो बेसिकली स्ट्रेटजी करिका हम टिके डिस्कस करिवा ओके जो माने